तो अभी हम लोग का आज है नॉर्मल लाइन है नॉर्मल प्लेन। इसके पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं। ऑसिलेटिंग प्लेन का एक क्वेश्चन निकालना। नाउ सी द डेफिनेशन 1। एनी लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट P टू ए कर्व इज कॉल्ड ए नॉर्मल लाइन एट। हम लोग पहले से जान रहे हैं कि पॉइंट P पे कोई टेंजेंट हमने खींचा तो उसका परपेंडिकुलर कोई लाइन है तो दैट इज नॉर्मल। एविडेंटली फॉर ए 3 डायमेंशनल स्पेस कर्व, अगर ये 2 डायमेंशन में तो एक ही नॉर्मल है, बट व्हेन देयर इज ए 3 डायमेंशनल स्पेस there will be infinite number of such normal lines, and all those normal lines will lie in a plane. The plane through a point P perpendicular to the tangent at P is called the normal plane at P. और ये सारे नॉर्मल्स एक प्लेन पर होंगे जिनको हम लोग नॉर्मल प्लेन बोल रहे हैं। इस नॉर्मल प्लेन में कोई भी लाइन है, that line is perpendicular to the tangent at P. तो नेक्स्ट है, thus the normal plane at P is the locus of the normal lines to the curve. ठीक है। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल प्लेन, यानी कि जो नॉर्मल प्लेन है उसका हमें इक्वेशन निकालना है। लेट स्मॉल r बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट P ऑन ए कर्व। ट्रेस करो, अपना फिगर याद करो जो फिगर बना के दिखाए थे। कैपिटल R स्मॉल r, पॉइंट P कैपिटल Q, P पर टेंजेंट है। If capital R is the position vector of a current point on the normal plane at P, then the vector capital R minus small r lies in this plane. Since the vector r dot is perpendicular to this plane, we have capital R minus small r dot r dot will be 0, क्योंकि r dot और r minus r perpendicular हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 0, because cos 90 is 0, which is the required equation of the normal plane at P. तो इसको याद रखना है, r minus r dot is equal to 0, equation of normal plane at P. The equation 1 may also be written in this form. We can also write it as r minus r dot t is equal to 0, because r dot is equal to t. Of all the normals, 2 normals are of special significance. Infinite number of normals हैं, लेकिन 2 नॉर्मल पे हमको ज्यादा ध्यान देना है। फर्स्ट, these are known as principal normal and binormal. प्रिंसिपल नॉर्मल हो गया और बाइनॉर्मल हो गया, उनका डेफिनेशन नीचे दिया हुआ है। देखिए प्रिंसिपल नॉर्मल क्या है। द नॉर्मल लाइन इन द ऑसिलेटिंग प्लेन एट ए पॉइंट P ऑन ए कर्व इज कॉल्ड द प्रिंसिपल नॉर्मल एट। जो ऑसिलेटिंग प्लेन है उसमें जो नॉर्मल पड़ा हुआ है, लाई है, दैट विल बी कॉल्ड एज प्रिंसिपल नॉर्मल। Thus the principal normal is the intersection of the normal plane and the osculating. इसको इमेजिन करना होगा कि ऑसिलेटिंग प्लेन कैसे है, नॉर्मल प्लेन कैसे है, they are intersecting and the line of intersection is the principal normal. Also the plane containing the tangent and the principal normal is the osculating plane. ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं। We shall denote the unit vector along the principal normal by n. तो प्रिंसिपल नॉर्मल के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर है उसको हम लोग n से दिखाएंगे। नेक्स्ट, देयर इज बाइनॉर्मल। द नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल नॉर्मल इज कॉल्ड बाइनॉर्मल, यानी प्रिंसिपल नॉर्मल है उसका जो परपेंडिकुलर है उसको हम लोग कह देंगे बाइनॉर्मल। Thus the binormal is the line perpendicular to the osculating plane. तो बाइनॉर्मल क्या हुआ, ऑस्कुलेटिंग प्लेन के भी परपेंडिकुलर हो गया। ऑस्कुलेटिंग प्लेन में n है और तुम्हारा प्लेन है। नेटवर्क कमजोर हो गया है, मतलब ये n है और ये t है, दोनों है ऑस्कुलेटिंग प्लेन में। We shall denote the unit vector along the binormal by b. The sense of b is chosen in such a manner that the triad T and B form a right-handed system of axes, that is B is equal to
t क्रॉस n, यानी कि अगर t इस तरह से है और n इधर है तो t क्रॉस n विल बी कमिंग आउट ऑफ दिस स्क्रीन। इसका फिगर से आगे क्लियर हो जाएगा। देयर इज another plane called rectifying plane। देखो, द प्लेन कंटेनिंग द टेंजेंट एंड बाइनॉर्मल, जो बाइनॉर्मल है वो और टेंजेंट, इन दोनों को कंटेन करने वाला जो प्लेन है इज कॉल्ड रेक्टिफाइंग प्लेन। तो the equation of the rectifying plane at PR is evidently r minus r dot n will be 0 because this n will be perpendicular to r minus r. We have thus defined at a point of a three-dimensional curve an orthonormal triad of fundamental unit vectors t, n and b. T along tangent हो गया, n along principal normal and b along binormal, such that t dot n is your 0, n dot b is 0 and b dot t is 0 because they are perpendicular to each other. N cross b is your t, t cross t is your n, and t cross n is your b. Means they form a triad. Note that these unit vectors जैसे i j t होता है उसी तरह से ये काम कर रहे हैं। Note that these unit vectors vary from point to point on a curve. कोई कर्व के अलग अलग पॉइंट पे इनका डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगा। We have also seen that each point this moving triad of unit vectors determines three fundamental planes। तीन प्लेन बता दिया which are mutually perpendicular, जो कि एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे। The equations of these planes may be written as r minus r dot t, जो कि ऑस्कुलेटिंग प्लेन है। ऑस्कुलेटिंग प्लेन क्या होगा? बाइनॉर्मल के परपेंडिकुलर है। r minus r dot t is equal to 0. This is your normal plane, and r minus r dot n is equal to 0. This is your rectifying plane। तो ठीक बाद जिसका फिगर है उससे आइडिया क्लियर हो जाएगा। देखो, this is your osculating plane containing t and n, and this osculating plane is perpendicular to b, means binormal. And this is your normal plane containing n and b. This is perpendicular to t. And this is your rectifying plane containing b and t, and this is perpendicular to n. So these three are planes perpendicular to each other. Next है directions of principal normal and binormal। देखिए हम लोग इसको भी जल्दी से। Since the binormal is perpendicular to the osculating plane, देखो फिगर से क्लियर हो रहा है। This binormal is perpendicular to this oscillating plane. It follows that it is parallel to the vector r dot cross r double dot। इसके पैरेलल हो जाएगा कौन? बाइनॉर्मल। Again, since the principal normal here is perpendicular to both and tangent and the binormal, t और n b के perpendicular है, this is your n. It must be parallel to the vector r cross r double dot cross r dot, that is parallel to the vector। इनको निकाल लो क्रॉस प्रोडक्ट, तो r dot square r double dot minus r dot r double dot r dot। If the parameter is s, then the unit tangent vector is t is equal to r dash। r dash means differentiation with respect to s, so that r dash square is equal to 1। r dash square क्या हो जाएगा? t dot t dot is 1, which on differentiation gives r dash dot r double dash is equal to 0। This shows that r double dash is perpendicular to the tangent vector r dash। ठीक है। Also, the equation of the osculating plane shows that the vector r double dash lies in this plane, and hence r double dash is perpendicular to the binormal also। क्योंकि r double dash है हमारा osculating plane में। See here figure, r double dash is in the osculating plane and binormal is perpendicular, so binormal is perpendicular to this r double dash, hence r double dash must be parallel to the principal normal। क्या होगा? अब वो प्रिंसिपल नॉर्मल के पैरेलल जाएगा, because this is your principal normal lying in the osculating plane। Since binormal is perpendicular to the tangent,
बाइनॉर्मल टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, एंड द प्रिंसिपल नॉर्मल दोनों के, मींस B is perpendicular to T and N. Its direction must be parallel to the vector R dash cross R double dash. तो जो बाइनॉर्मल है उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, R dash cross R double dash के परपेंडिकुलर हो जाएगा, because R dash cross R double dash perpendicular to oscillating plane and B is perpendicular to oscillating plane, so both of them are in the same direction, or you can say they are parallel. Next है equations of the principal normal and binormal. देख लेते हैं इसको. See here figure, if R is the position vector of a current point Q, ये हमारा कर्व हो गया. This is our point Q, R is का position vector, this is point P, इधर tangent T है. So this is your principal normal and this is your binormal. तो O से हम लोग P को मिला दिए. Now we have a triangle OPQ. Then OQ is equal to R, also OP is equal to small r, and PQ will be lambda times n, where n is the unit vector along this principal normal. Where lambda is some scalar by triangle law of vector, vector OQ is equal to OP plus PQ. OQ is equal to OP plus PQ. So vector R will be small r plus lambda times n, which is the required equation of the principal normal. तो ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया, इस प्रिंसिपल नॉर्मल का इक्वेशन. Similarly, if R is the position vector of a current point R on the binormal, then the equation of the binormal will be capital R is equal to R plus mu B. Mu हो जाएगा क्या, एक स्केलर हो जाएगा, और B है यूनिट वेक्टर. So capital R is equal to small r plus mu B. This is the equation of binormal, and capital R is equal to small r plus mu will be the equation of प्रिंसिपल नॉर्मल. तो आज के लिए इतना ही. इसको तुम लोग नोट कर लो, और अगर कोई डिफिकल्टी है तो मुझे पूछो यहाँ.